So hello students, I hope all of you are doing great, right? This is Basavaraj, so your biology master teacher students. Welcome back to your own channel students, Vedantu Science Olympiad. Now, आज के क्लास में ना हम we'll be starting off with a new topic called as plant reproduction. इस plant reproduction में we'll be studying about something called as first of all what is a flower? A flower के पास कौन-कौन से parts होते हैं और उसके बाद हर एक part से ना क्या बनता है, right? Now let's say what is a stamen, what is a pistil, what is a carpel, right? So every single concept we will be going step by step fashion right now, one by one we'll be going students. So hopefully students, hopefully in today's class I think we can complete until microsporogenesis students. Until microsporogenesis we can easily finish students, easily finish until microsporogenesis. Okay students, so students, if I'm properly audible and presentation behind me is properly visible to all of you, quickly add fire emoji in the chat students, quickly add the fire emoji in the chat right now. Let me just check in my phone also students, let me just check in my phone also. Okay, so students, I just finished one class, so it took me some time to add the stream key and all that, right? I just finished a 2-hour class. One thing students, let me just check if I'm properly audible and visible students. Oh, okay, perfect, perfect. If I'm audible and visible students, perfect. Now students, now the first question for all of you, first question, what is a flower? Anyone? Students, what is a flower? Anyone students, what is a flower? Students, please remember, flower is nothing but, it is a reproductive organ. Flower, students, flower is nothing but, it is a reproductive organ. Flower is reproductive organ. With the help of इसी flower से ना, इसी flower से fruit बनता है, seed बनता है और एक new plant grow होता है. So one plant to next plant. If you want from one plant to next plant, if you want to make copies of a plant, if you want to reproduce plants, we need the flower. अगर flower नहीं है, reproduction difficult हो जाएगा. There are other methods called as your vegetative propagation, but this is the best method, right? That is the that is sexual reproduction students. That is the sexual reproduction. Okay. Now students, now समझिए students, this flower, can I also call it as students? Can I also call it as, there is something called as shoot apical meristem. Students, if you do not know, do not worry. Shoot apical meristem is a type of meristem which is present on the growing shoot tips and root tips. This is shoot apical meristem. So shoot tips. This shoot apical meristem will help to produce leaves in general case, leaves. Okay. But in the flower case, the shoot apical meristem gets converted to floral meristem. Gets converted to floral meristem. Let me just draw and show you. Let me just draw and show you. I can technically call even flower as a modified shoot also. I can also call it as a modified shoot also. Let me just draw and show you this. Okay. Now, do all of you know? Let's say I have a stem here. I have a stem. Students, यहाँ पे मेरे पास एक stem है. इस stem के अंदर nodes और internodes मिलते हैं, मिलते नहीं, जल्दी से बताओ. मिलते हैं ना? इस stem के अंदर हमारे पास nodes और internodes होंगे? होंगे. So let's say यहाँ पे हमारे पास nodes और internodes हैं. So these are called as what? These are called as nodes. And distance between two nodes here, the distance between two nodes, this region here, this region is called as what? Internode. Students, आपने ये खाया होगा ना, if you have eaten sugarcane, sugarcane जब खाते हो ना, दिखता है ना, sugarcane के पास होता है node internode, दिखता है ना sugarcane के पास node and internode. Now that is node and internode students. Now I want all of you to remember that, सब लोग याद रखना पड़ेगा, obviously this I generally teach. इस node से ना always leaf arises. एक node से ही पत्ता निकल के आता है, पत्ता हमारा पत्ता निकल के आता है, node से निकलता है हमेशा. So यहाँ पर भी एक पत्ता निकलेगा, यहाँ पर एक निकलेगा, यहाँ पर एक निकलेगा, यहाँ पर और एक निकल सकता है, दो निकल सकता है, ठीक है. So from nodal region I can get a leaf.
नाउ स्टूडेंट्स, इस लीफ है ना ये हमारे, दिस रीजन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज लीफ एक्सल. दिस रीजन हियर इज कॉल्ड एज लीफ एक्सल. इस लीफ एक्सल के अंदर ना there is always a bud here. There is a bud here. In a plant, in the leaf axil, there is a bud, students. Bud here. Understand? This is a stem. Stem has nodes. At one node, we can see a leaf is arising at a node. Okay. Now this is called as leaf axil. In this leaf axil, students, in this leaf axil, I have a bud. Now students, there are generally two types of buds. One is called as apical bud, which is present on the top. One bud which is present on the bottom here in the leaf axil. इस bud को हम कहते हैं axillary bud, students. इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? Axillary bud. ठीक है, axillary bud कहते हैं हम इसको. Now students, ये axillary bud है ना, ये axillary bud आगे जाके, ये axillary bud आगे जाके एक ब्रांच बन सकता है और it can develop into a flower. ठीक है? Okay. Now students, this is your axillary bud here. Now let me just draw one more diagram here, students. Let me just draw one more diagram. अब क्या होगा देखो, यहां पर हमारे पास लीफ है, हमारे पास लीफ है यहां पर इस लीफ के एक्सिल में क्या है हमारे पास? axillary bud है. Now students, this axillary bud will develop into a branch. Let's say this axillary bud will develop into a branch right now. Okay, axillary bud will develop into a branch like this, branch. Now students, at one point, this branch undergoes condensation. This branch here undergoes condensation. That is, all the, यहाँ इस ब्रांच के पास भी हमारे पास नोड्स इंटरनोड्स होंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली होंगे नोड्स इंटरनोड्स. ये सारे के सारे नोड्स और इंटरनोड्स कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे and it will become something like this. Let me draw here also. It will turn into something like this, students. All the nodes and internodes are getting condensed here. Same branch will become like this, and eventually this particular structure will start to look something like this. Here, or this region actually, you all of you can identify now. It is actually called as what? Thalamus also. It is called as thalamus. इसी थैलामस के ऊपर स्टूडेंट्स, we can get the stigma, style and ovary. Here on this itself we can get the filament and anther here. On this platform itself we can get the petals here. On this platform itself we can get the sepals here. So इस तरह स्टूडेंट्स, इस तरह से यहां पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना एक फूल निकल के आ जाता है स्टूडेंट्स, फूल निकल के आ जाता है. ओके, देयर विल बी अ फूल राइट नाउ. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज हाउ द फ्लावर डेवलपमेंट हैपेंस. Okay, so here we have first, initially we have the axillary bud. Axillary bud is present in the leaf axil. This axillary bud will develop into a branch. Branch undergoes condensation. Students, branch undergoes condensation, and this condensed structure here develops into a flower, students. Students, this is basics. This is also very basic one. This is very basic. This is basics. Okay, so this particular structure will develop into a flower. Okay, now just remember this much. This is a very complex process actually, but now we will focus on the flower, students. Flower is nothing but a modified shoot. The shoot is undergoing modification now. It is a modified shoot. Shoot is undergoing modification.
terms is it? Students, biology terms, I assumed you know what is not an internode. Students, Divyanshu, if you do not understand any biological terms which I am using, ask me in the class only, students. Ask me in the class. I will repeat it. Okay. So this is called as thalamus. I'll teach you what is thalamus right now, students. See, this is a typical flower. This is a typical flower. Can you see, students? This is a typical flower right now. This is a bisexual flower. Bisexual मतलब क्या है? Bisexual मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों sex organs हैं यहाँ पर. We have the gynoecium and the androecium. ठीक है? Androecium, students. Now students, do all of you see this swollen end here? Here, this part, students, do all of you see this swollen end here? This swollen end is called as thalamus, also called as receptacle. This is swollen end receptacle, students. Okay, it is called as thalamus or receptacle, this swollen end of a flower. This is called as the stalk of a flower. Stalk of a flower. Stalk of a flower is called as pedicel. It is called as pedicel. Okay, I hope it is new information for all of you. It is called as pedicel. Now यहाँ पर ना हर एक फ्लावर के पास 4 whorls होते हैं. Whorls माने layers. ठीक है? यहाँ पर the outermost whorl is called as the calyx. Here, outermost whorl is called as calyx, students. Let me draw and show you this diagram one more time, students. You will get a better understanding if I draw and show you, students. Okay, let me just draw, students. Draw and show you. Okay, this right now is the thalamus. Thalamus, also called as receptacle. Also called as receptacle. This is the stalk here. Stalk is called as pedicel. Pedicel here is a stalk here. Now, students, इस stalk के ऊपर ना we get the outermost whorl. Outermost whorl, students, the outermost whorl will have leaf-like structures. The outermost whorl will have what? Leaf-like structures like this. Leaf-like structures. These are the leaf-like structures in the outermost whorl. These leaf-like structures, they are part of a whorl called as calyx. They are part of a whorl called as calyx. Calyx, students, calyx. Now, what are calyx made of, students? Calyx are made up of, these are called as sepals. So you can see here also. This is called as calyx. This entire whorl layer is called as calyx. Right? It is called as calyx. But this individual ones are called as what? They are called as sepals. They are called as sepals. Clear, students? Clear this much? Okay. Now यहाँ पर ना हमारे पास we have the second whorl. Okay. The second whorl is very beautiful, students. Second whorl is very beautiful, very beautiful. Second whorl is very beautiful here. It is technically it is generally very bright colored. It is bright colored whorl. Okay. Now the second whorl is called as corolla. This one is called as what? Corolla. You can see, students. You can see here also. See this one, petals one. It is called as what? Corolla. It is called as, students, what? Corolla right now. Okay, corolla right now, students. This corolla is actually made up of petals. See, this individual is called as petal. Petal 1, petal 2, petal 3. But this entire whorl is called as corolla. It is made up of petal. Made up of petal, students. Okay. Now, students, यहाँ पर हमारे पास we have the third whorl right now. Third whorl is the
androecium. And androecium is made up of stamen. Okay, this right here is called as stamen. This entire structure, this entire whorl, students, entire whorl is called as what? Entire whorl is called as androecium. Entire whorl, students, is called as what? Androecium. You can see here, students. Okay, it is called as androecium. Okay. Androecium, students. Now, what is androecium, students, made up of? This entire androeciums are made up of stamen. Okay. Now, this entire structure, each one structure, students, one structure here. Okay. This one structure is called as stamen. Okay. Now, this stamen has two parts. This stamen has two parts here. Okay. Stamen has how many? Two parts. This long slender, can you see, students? This long slender line, long line here. This long line is called as filament. And this top structure, you see this bilobed structure here. This is called as anther. This anther and filament together is called as stamen actually. It is called as stamen. It is called as what? Stamen. So this anther and filament, students. Anther and filament together is called as stamen. So this long thing is called as what? Anther. This entire thing, bilobe structure, is called as anther. Anther and filament together it is called as stamen. Okay. And anther and filament. Okay, students. Now, this androecium, students. Androecium is always the male part of the plant. Male part of the plant is called as androecium. Okay. Students, similarly, we have a female part also. Female part. Students, you see, this is the female part here. This is the female part, student. This is the female part here. Now, this female part, student, this female entire thing is called as what? Entire thing is called as gynoecium. You can see, students. You can see here. Entire thing is called as what? Gynoecium. You can see gynoecium here. This entire thing is called as what? Gynoecium. Right? Now, students. Now, what is gynoecium made up of? Gynoecium is made up of something called as carpel or pistil. Okay, technically carpel is supposed to be, right? Because this is one carpel right now. Now, this carpel has three parts. Can you see? It has three parts here. This part is called as stigma. This part is called as style. This swollen end, this swollen end. This swollen end is called as ovary. So here we have, students, here we have the stigma, style and the ovary. Stigma, style and the ovary are the three parts of the carpel. Okay, students, done. And students, please remember this gynoecium is the female part of a plant. Female part of the plant, students. Female part of the plant. Okay, students.
Now students, I'm going as slow, बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं सबको मैं. Students, quickly smash the like button, all of you. All of you, quickly smash the like button. Right. Now this is the stigma cell ovary of your gynoecium. Androecium has anther and filament. Here we have thalamus. Pedicel is the stalk here. Pedicel is the stalk here. Calyx, corolla, students. So outer first wall, second wall, third wall, and fourth wall. So students, in total there are 4 whorls here. 4 whorls. 4 यहाँ पर हमारे पास हैं whorls. Calyx made up of sepals. Corolla, second one made up of petal. Androecium made up of stamen. Third one. Fourth one is gynoecium, which is made up of carpel of pistil. 4 different तरह के हमारे पास whorls हैं यहाँ पर एक bisexual flower के अंदर. Bisexual flower is a flower which has both the sex organs. It has androecium, gynoecium. दोनों है यहाँ पर students. अगर दोनों है तो it becomes bisexual. If any one is present, it becomes unisexual, students. Okay. Now students, now I want all of you to understand there is something called as essential whorls and non-essential whorls. Essential whorls are the whorls which are involved in reproduction. Students, can anyone tell me which are the essential whorls now? Can anyone tell me which are the essential whorls? Anyone in the chat? Essential whorls are the whorls which are involved in reproduction, direct involvement. That is androecium and gynoecium. So androecium and gynoecium are involved in reproduction. They're essential whorls. Okay, they're essential whorls. Essential whorls. While the calyx and corolla, these two are what? Non-essential. Non-essential whorls. Non-essential whorls because they have an indirect role. They have a indirect role, students. Indirect role. Now, what do I mean by इसका मतलब क्या indirect role मतलब? Very simple, students. Corolla will help in what? Attracting the pollinators. Or calyx, students. Calyx will help in protection. They're protecting the flower at the bud stage. Okay. Now, students. Now, students, in today's class, we'll mainly focus on the stamen. एक stamen ठीक तरह से पढ़ लेंगे आज. We will learn the entire structure of a stamen. उसके बाद ना अगली क्लास में हम गाइनीशियम के बारे में बात करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये बहुत बड़ा यूनिट है. Plant reproduction is very large. I will try to go as detailed as possible with respect to this topic. Okay students? Shall we start stamen? Students, start करें. All of these are present in your class 10th. Class 9th or 10th से होता है सारा. Usually class 9th or 10th से पढ़ाना, you learn all this. But this what I'm teaching you is class 12th level. What I'm teaching you right now, students, all of this is class 12th level concepts. Okay. Okay, students. Now, whatever you'll be learning from me right now in this class, microsporogenesis, megasporogenesis, all I'll be teaching you is class 12th level. Okay, not 11th, 12th bio this is. Class 12th. तुम्हारी 12th grade की bio ही है जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको भी. ठीक है, 12th level की bio है. ठीक है, students. Now, what is stamen, students? Stamen is the male part of the part, while the carpel is the female part. So stamen is the male part and the carpel is the female part. All of you know. Stamen, students. Stamen has how many parts? Stamen generally has 2 parts. I saw, students. All of you. This is the थैलामस. इस थैलामस से हमारे पास इस तरह से स्टेमन निकल के आते हैं. इस स्टेमन के पास ना 2 पार्ट्स होते हैं. 2 पार्ट. Okay. A stamen has 2 parts. It has long, slender filament and it has a bilobed anther. Anther and filament together it is called as stamen. Together it is called as stamen, students. Okay. Students, we will go we are doing sexual reproduction. Yes, we are doing sexual reproduction flowering plants. We are doing right now sexual reproduction flowering plants, only in flowering plants. Okay.
binary fission, all that is different. Okay. Now students, now can all of you see students? This is the filament, this is the anther here, anther. Now students, now if you take a anther and you take a cross section, if you take a anther here, this is the anther, right? This is the filament, stalk is the filament here, anther. अगर एक anther को लेके ना आप कट करोगे उसको, ऊपर से उसको कट करोगे, so what do you get? So if you take an anther, if you cut from the top and if you see a top view, if you see a top view, what do you get students? What do you get? This is what we get students. This is what we get. This is what you get. This is a anther from the top view. Now students, इस anther का ना बहुत different names हैं. This anther students, this anther here, this anther, it is called as bilobed structure. Students, this anther here is called as what? Bilobed structure. Why? It is called as bilobed structure because there are how many lobes? This entire thing is one lobe. This entire thing is one more lobe. Students, how many lobes are students? Tell me. How many lobes are there? There are in total 2 lobes. There are in total 1 lobe, second lobe. That is why it's called as lobe 1, lobe 2. Bilobed structure. It is also called as dithecous. Students, it is also called as dithecous structure. It is also called as what? It is also called as dithecous. Why student dithecous? It is called as dithecous because there are 1, 2 theca. So one lobe has how many theca students? Anyone? All of you. One lobe has how many thecas? Anyone who can tell me students? One lobe here you can see. One lobe has 2 thecas here. One lobe has 2 thecas. Okay. So students, if I ask you a question, one lobe has 2 thecas and we have 2 lobes here. So how many thecas do we have in total students? How many thecas do we have in total? In total, how many thecas? All, anyone? Students, in total, how many theca do we find here students? In total? Total 4 thecas students. Totally 1, 2, 3, 4. We find 4 thecas here. So can I call it tetrathecous? Tetrathecous also. It is also called as tetrathecous. Okay. And students, it is called tetrathecous. It is also called as what? In some books, you can also see tetragonal arrangement. We can see something called as, in some books, we can see tetrasporangiate structure. Now, it is called as tetrathecous because there are 4 thecas here. 4 thecas. Okay. It is called as tetrasporangiate. Why it is called tetrasporangiate? I'll teach you right now. This you will learn. This you will learn right now. But for now, students, remember, in one anther, we can see 1 lobe, second lobe. Every single lobe has 2 thecas, 2 thecas. In total, 4 thecas, students. Okay. It is called as bilobed structure because of 2 lobes. Dithecous because 2 theca here. Okay, students. Now, students, now this is nothing but 1 here. 1 theca from here. Yes or no? So if you look at a top view, if you look at from top view, 1 theca here, second theca, third, fourth. यहां पर हमारे पास टॉप व्यू से चारों के चारों थीकास दिख रहे हैं, थीकास दिख रहे हैं स्टूडेंट्स. सो हर एक थीका, दिस वन राइट, दिस एवरी सिंगल थीका हियर राइट. If you take a cross section and you observe under microscope, students, if you see observe under microscope, what do we get, students? What do we get? Now this every single theca here, right? Theca is like a cavity. Theca is like what? A bowl. Theca is a bowl. इस थीका के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? इस थीका के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? See, theca is like a cavity. You should understand. Theca is a cavity. इस थीका के अंदर ना there is something called as
sporangia. Students, all of you, it is inside one theca we have sporangia. So how many thecas in total? There are 4 thecas in total. If there are 4 thecas in total and there is in every theca there is sporangia, so can I call it as tetrasporangiate? All of you, make sense? All of you? Yes or no? All of you, there is sporangia here. Now students, this is a sporangia present in the case of your male. So it is called as what? It is technically called as microsporangia. In the case of female, it is called as what? Megasporangia. That is ovule, megasporangia. Here we have microsporangia, students, microsporangia. So we have in total 4 microsporangia in total, students. We have in total 4 microsporangia in total, students. 4 microsporangia right now in total, students. Okay, 4 microsporangia in total. Okay, students. Is it clear to students? Is it clear to all of you? Any doubt here? Students, any doubt here? Until now, any doubt? All of you, ask me in the chat. Jaldi se pucho, students, because now we'll go even more advanced now. Now we'll go even more advanced level now. See, there are bilobed because there are 2 lobes, dithecous because there are 2 thecas here. It is called as tetrathecous because 4 thecas. It is called as tetrasporangiate. It is called as tetrasporangiate. It's called tetrasporangiate. Why? That means this is the basics. This is the basics you have to do. It is called as tetrasporangiate because every theca, students, imagine theca is like a cavity, right? Theca is like a cavity, students. Theca is like a cavity, right? Inside one cavity we have the sporangia. Okay, students. Now this is a microsporangia. हर एक माइक्रोस्पोरांजिया के different layers होते हैं बाहर से protection. Now this is a cross section of one microsporangia. One microsporangia. Now one microsporangia has multiple layers. Okay, now here students, is microsporangia के outermost layer, the outermost layer is called as epidermis. It is called as what? Epidermis. Second layer कौन सा हमारे पास? Second layer है endodermis, endothecium. Second layer हमारे पास. Third layer हमारे पास है middle layer हमारे पास, middle layer. So इस microsporangia के पास तीन लेयर बन गए, अभी 3 लेयर बन गए. सबसे बाहर है एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीसियम, थर्ड इज मिडल लेयर. इसका सबसे अंदर का लेयर है ना, इस माइक्रोस्पोरांजिएट का सबसे अंदर का लेयर को हम कहते हैं टपीटम. इसको हम कहते हैं द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज टपीटम. स्टूडेंट्स, टपीटम. सो स्टूडेंट्स, कितने लेयर बने हमारे पास? इन टोटल हमारे पास 4 लेयर बने हमारे पास. Which term you did, students? Ask me which term you didn't understand. Devanshu, I'm explaining the terms also. Devanshu, I'm trying to explain every term also here. Term. Again, microsporangia. Sporangia is a structure inside here. Okay. Micro because small, and it is present in the case of male. Males are small. Okay. Now, outermost layer is epidermis. Second layer is endothecium. Third layer is middle layer. And सबसे अंदर का layer है ना हमारे पास. सबसे अंदर का layer है टपीटम में हमारे पास. टपीटम सबसे अंदर का लेयर इज टपीटम. नाउ स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं आपके एनएसएजीएस में? पूछेंगे कि टपीटम का फंक्शन बता दो हमको. टपीटम का फंक्शन बताओ, ऐसे पूछते हैं. टपीटम का मेन फंक्शन हमारे पास क्या पता है? टपीटम का मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन. जो टपीटम यहां पर है ना, दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. ठीक है. सो ये टपीटम क्या करता है? टपीटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. टपीटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टपीटम. ठीक है. और जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों की स्टूडेंट्स, ये तीनों की तीनों लेयर प्रोटेक्शन करते हैं. प्रोटेक्शन, उतना ही प्रोटेक्शन इन द सेंस. और जो अंदर का लेयर सबसे टपीटम है, वो न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. इतना समझ आया सबको? स्टूडेंट्स, इतना समझ आया सबको? हम एक और स्टूडेंट, एक और देख लो.
यहां पर हमारे पास ये है हमारा एंथर का क्रॉस सेक्शन, एंथर का क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास। इस एंथर के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने स्पोरांजिएट है? 4 स्पोरांजिएट है हमारे पास, टेट्रास्पोरांजिएट, टेट्रास्पोरांजिएट, ठीक है। इट इज, दिस एंटायर थिंग इज वन लोब, दिस एंटायर थिंग इज वन लोब, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, डाइथिकस, टेट्राथिकस, टेट्रास्पोरांजिएट स्टूडेंट, टेट्रास्पोरांजिएट, ठीक है। दिस इज वन माइक्रोस्पोरांजिया, वन माइक्रोस्पोरांजिया, दिस इज अ माइक्रोस्पोरांजिया स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरांजिया। इस माइक्रोस्पोरांजिया के पास कितने लेयर है? 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टपीटम। स्टूडेंट्स इस टपीटम के अंदर क्या है? अभी इस टपीटम के अंदर ना, सबसे अंदर इसके बीचों बीच में ये ग्रीन कलर पार्ट दिख रहा है, ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनस सेल्स। सो हमारे पास क्या भी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द बेसिक चैप्टर ओनली, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, प्लांट रिप्रोडक्शन, ओके स्टूडेंट। दिस इज माय 4th आवर कंटिन्यूअस, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल टायर्ड। इसके पहले हमने एक क्लास लिया था, बायोमोलिक्यूल्स लिया था हमने, जो हम नीट वाले बच्चों के लिए, जो 2 ओवर चला था। उससे पहले मैंने एक डीएनए बैच लिया था, पेड बैच। तो मेरा ये तीसरा क्लास है कंटिन्यूअसली, है ना। तो इससे थोड़ा टायर्डनेस दिख रहा है, थोड़ा भी टायर्डनेस दिख रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स समझो इसको, लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर स्टूडेंट्स, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। कुछ नहीं, सॉरी मत पूछो, समझो, ट्राई करो, ठीक है। ये देखो अभी, सो लेट मी जस्ट रिकैप बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक कैसे पहुंचे हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले देखा कि हमारे पास एक स्टेम है स्टूडेंट्स, समझो इस बात को। हमारे पास एक स्टेमन है, एक स्टेमन, दिस इज कॉल्ड स्टेमन। एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर होते हैं हमारे पास, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट, छोड़ो इसको, एंथर को देखो, एंथर को देखो। अगर एक हम एंथर को देखेंगे ना, टॉप पार्ट्स देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ये एंथर, इस तरह से दिखेगा पहले, ठीक है। देखो इस तरह से दिखेगा एंथर टॉप व्यू से। हर एक एंथर के अंदर 2 लोब है हमारे पास, एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ। हर एक लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर हमारे पास 2 थीका है, यहां पर थीका 1, थीका 2, एक लोब के अंदर। सो एक लोब के अंदर 2 थीका है, तो 2 लोब के अंदर टोटली 4 थीका, right? So it is called as bilobed dithecus tetrathecus condition. It is also called as tetrasporangia students, क्यों? Because इस थीका के अंदर ना, इस थीका के अंदर there is sporangia. Which type of sporangia? Microsporangia is present. So हर एक थीका के अंदर sporangia है हमारे पास. So we come to this diagram now. So हर एक थीका के अंदर we have sporangia, microsporangia. नाउ इस माइक्रोस्पोरांजिया के पास स्टूडेंट्स कितने लेयर्स हैं? हर एक माइक्रोस्पोरांजिया के ऊपर 4 लेयर बने, यहां पर 4 लेयर बने। सबसे बाहर का लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, तीसरा लेयर है मिडल लेयर, और सबसे अंदर का लेयर है यहां पर, सबसे अंदर का लेयर है टपीटम। और यहां पर टपीटम का मेन फंक्शन है क्या? न्यूट्रिशन। नाउ स्टूडेंट्स इस टपीटम के अंदर की तरफ क्या है? इस टपीटम है ना, यहां पर इस टपीटम के अंदर की तरफ है स्पोरोजीनस सेल्स। क्या है? स्पोरोजीनस सेल्स। सो हर एक माइक्रोस्पोरांजिएट के अंदर, हर एक माइक्रोस्पोरांजिएट के अंदर स्पोरोजीनस सेल्स मिलते हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स इतना हिंदी ना मैंने अपनी लाइफ में बात किया, इतना ही। स्टूडेंट्स हाउ इज माय हिंदी नाउ? इंप्रूविंग और नॉट? स्टूडेंट्स हाउ इज माय हिंदी? क्रेजी नो? इंप्रूवमेंट? आई एम टेकिंग लैंग्वेज क्लासेस, आई एम वॉचिंग हिंदी मूवीज टू लर्न हिंदी नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स? सो समझ आया इतना? इतना सबको समझ आया क्या? टपीटम, हाँ टपीटम है हमारे पास, ठीक है, टपीटम है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, सी माय हिंदी इज इंप्रूविंग, you should also improve. If I can improve my Hindi very well, all of you can also very improve. Yes or no? Learn this then. Nice. Now students, हमारे पास स्पोरोजिनस सेल्स है हमारे पास अभी। स्टूडेंट्स यहां पर देखो और डायग्राम दिखाया मैंने। दिस इज वन इज माइक्रोस्पोरांजिया स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। यहां पर हमारे पास माइक्रोस्पोरांजिया, माइक्रोस्पोरांजियम, 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टपीटम, और सबसे अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स? ना स्टूडेंट्स यहां पर मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, पढ़ लो एक बार। नो
स्टूडेंट्स आई विल गिव यू दिस नोट्स स्टूडेंट्स, अभी हमारा थोड़ा चेंज किया है हमने, ये सारे के सारे नोट्स ना आपको कल ही मिल जाएंगे, कल की कल 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 इस स्टूडेंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना नोट्स मिल जाएंगे आपको, ये सारे के सारे मेरे नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कल ही मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं क्लास होते ही मैं ये नोट्स को अपलोड करूंगा, हमारी टीम एक है, हमारी टीम उसको एक लिंक बना के इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देगी डायरेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स नाउ यहां पर एपिडर्मिस स्टूडेंट्स डिप्लॉयड है, हमारे पास डिप्लॉयड है सारा एपिडर्मिस, यहां पर मैंने फंक्शंस डाला है, ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे नोट्स में मिल जाएंगे। डिप्लॉयड पर टपीडम स्टूडेंट्स याद रखो, टपीडम इज ऑलवेज पॉलीप्लॉयड, मतलब इट इज मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। पॉली मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी, प्लॉयडी न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, इट इज मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन, दैट इज टपीडम स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्रॉम बिहार ठीक देंगे कट्टा कपर में, स्टूडेंट्स आई कांट अंडरस्टैंड, ओके सर। इन डिप्लॉयड देयर आर टू न्यूक्लियस, नो, diploid basically means not two nucleus, understand? Diploid means two set of chromosomes, that is the meaning of diploid. Okay students, let me just teach you this. What is the meaning of haploid? What is the meaning of diploid? Students समझो इसको बात को, just understand the simple difference, समझो इस बात को स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, हमारे हर एक सेल के अंदर वी हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम स्टूडेंट्स? हर एक सेल के अंदर वी हैव 46 क्रोमोसोम, हमारे हर एक सेल के अंदर स्टूडेंट्स, हमारे हर एक सेल के अंदर वी हैव 46 chromosomes. This 46 chromosomes can also be told as 23 pair. See, एक पेयर मतलब दो, है ना, एक पेयर मतलब दो. So we can have 23 pair means 40 chromosomes. Now students, always remember, n means 23, 2n means 46, 3n means 69, 4n means, students, you tell me in the chat right now. Just double it students, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास 23 पेयर मतलब हमारा नॉर्मल सेल डिप्लॉयड है। सो द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड इज दैट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो डिप्लॉयड के अंदर ना द सेल और ऑर्गेनिज्म will have two sets of chromosome. 23 is one set, 23 is one set, 23 one more set. So we have two sets of chromosomes. That is called as diploid. So students, haploid मतलब क्या बताए? Haploid मतलब one set of chromosome. मतलब हर एक हैप्लॉइड सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे इतना ही, वन सेट। बट हम डिप्लॉयड है, हम डिप्लॉयड है स्टूडेंट्स, ओके। टू सेट, वन सेट डजंट मीन न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस मींस दैट इज बाइन्यूक्लिएटेड और बिकम्स डिफरेंट, ओके। दैट्स 92. Yeah. Now students, here it says polyploidy. Why is it called polyploidy? Because it is multinuclear condition. Here we can have multiple sets also. Now why we have polyploidy? Because यहाँ पर ना कायरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट? कायरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा ना, the diploidy becomes more and more. Diploid, triploid, quadruploid, pentaploid, it keeps on increasing. Okay? स्टूडेंट्स समझ आया सबको? इतना समझ आया सबको? व्हाट इज डिप्लॉयड, व्हाट इज पॉलीप्लॉयड? ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए ना सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होगा आपको,
अगर इसको समझ गए ना आप, अगर ये चमक गया सबको, टुडेस टॉपिक माय जॉब इज ओवर टुडे. दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रो मींस मतलब क्या है? स्मॉल. स्पोरोजेनिस मतलब स्पोर फॉर्मेशन. यहां पर हम माइक्रोस्पोर बनाने वाले हैं. माइक्रोस्पोर्स आर पोलन ग्रेन्स. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट? ऑल ऑफ यू स्टार्ट करें. स्टूडेंट्स स्टार्ट करें आज का सबसे मेन. ठीक है सर. असाइनमेंट क्यों नहीं मिलता स्टूडेंट्स? असाइनमेंट में थोड़ा थोड़ा बिजी हूं स्टूडेंट्स. असाइनमेंट बनाएंगे हम स्टूडेंट्स, असाइनमेंट बनाएंगे. स्टूडेंट्स चाहिए असाइनमेंट सबको? स्टूडेंट्स आपके पास तत्व है क्या? स्टूडेंट्स आपके पास तत्व है? तत्व, बट ये मेरा नीट का तत्व है. हर एक तत्व के पास ना असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे. वहां से मैं अपनी टीम को बताऊंगा कि आपको मिल जाएंगे आज से. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट स्टार्ट करें. निधि मैम सच में बोलती है. मैंने निधि मैम को क्लास नहीं देखा स्टूडेंट्स, मैंने अपने आप ने बताया मैंने. ठीक है ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोस्पोर स्टूडेंट्स. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? शैल वी स्टार्ट? ठीक है. नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां से स्टार्ट होता है? ये सारा का सारा खेल ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का स्टार्ट होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टूडेंट्स. ये कहां पर मिलते हैं स्पोरोजेनस सेल्स? स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट्स? और तत्व से ना स्टूडेंट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स. बताओ ये स्पोरोजेनस सेल्स कहां से मिलते हैं? एनीवन? कोई बता सकता है? कोई स्टूडेंट कोई बता सकता है मेरे को? ये स्पोरोजेल्स कहां थे? ये स्पोरोजेनस सेल्स कहां थे? याद है किसी को? स्टूडेंट्स ये स्पोरोजेनस सेल्स कहां थे? यहां पर स्पोरोजेनस सेल्स. याद है स्टूडेंट्स? एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास स्पोरोजेनस सेल्स थे. स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस सेल्स स्टूडेंट्स, स्पोरोजेनस सेल्स थे. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ ये स्पोरोजेनस सेल्स डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है? डिप्लॉयड है. ठीक है. नाउ ये स्पोरोजेनस सेल से एक सेल बहुत बड़ा बन जाता है. यहां पर बहुत बड़ा बन जाएगा. एक स्पोरोजेनस सेल जो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड एज MMC. दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टूडेंट्स, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. डिप्लॉयड. यहां पर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम स्टूडेंट्स है. नाउ जो ये MMC है ना हमारे पास, दिस MMC, right, now it will undergo something called as meiosis. Meiosis 1. It will undergo now meiosis 1 students. Meiosis 1. ठीक है ना? जब ये meiosis 1 जाएगा ना, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स. yes or no? One cell will divide into two cells right now. Students, these two cells after meiosis, students याद रखो स्टूडेंट्स, always remember, हर एक मियोसिस के बाद, स्पेशली आफ्टर मियोसिस 1, द डॉटर सेल्स आर गोना बी हैप्लॉइड. दे आर गोना बी हैप्लॉइड इन नेचर. स्टूडेंट दे आर गोना बी हैप्लॉइड इन नेचर. प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज याद रखो इसको. दे विल बी हैप्लॉइड इन नेचर बिकॉज मियोसिस 1 इज ओवर नाउ. नाउ वी हैव मियोसिस 2. नाउ मियोसिस 2 के बाद क्या हो गया? एक ये सेल दो सेल में बढ़ जाएगा और ये एक सेल दो सेल में बढ़ जाएगा. सो हमारे पास स्टूडेंट्स मियोसिस 2 के बाद कितने सेल मिले स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू, मियोसिस 2 के बाद कितने सेल मिले हमारे पास? मियोसिस 2 के बाद मियोसिस, स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा है, काव्या देख लो एक बार चैनल पे ना, मैंने मियोसिस एक वीडियो बनाया पूरा का पूरा मियोसिस 1 पे मैंने चैनल पे एक वीडियो बनाया. मेरे को प्लीज चेक करो उसको एक बार. ठीक है. सो यहां पर हमारे पास 4 सेल मिलेंगे. हमारे पास कितने? 4 सेल. 4 सेल स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग में ना ये चारों सेल एक साथ ज्वाइन हुए होंगे. बट दीज सेल्स स्टूडेंट, दीज हैप्लॉइड सेल्स है ना हमारे पास, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स
टेट्राड। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पर एक एंजाइम आता है, एंजाइम कॉल्ड एज कैलेस एंजाइम। ये कैलेस एंजाइम आके ना ये बाहर का जो लेयर है ना, बाहर का लेयर, उसको तोड़ देगा, तोड़ देगा। उसके बाद हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे, फ्री माइक्रोस्पोर्स। आफ्टर कैलेस एंजाइम एक्टिविटी, आफ्टर कैलेस एंजाइम एक्टिविटी हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड नहीं होता, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, जो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन गए स्टूडेंट्स। नाउ दीज माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, दीज माइक्रोस्पोर टेट्राड्स चारों के चारों पोलन ग्रेन में बन सकते हैं, पोलन ग्रेन बन सकते हैं। सो मैं चारों नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक ही बनाऊंगा उनसे मैं। ये 4 है ना, ये चारों के चारों भी पोलन ग्रेन में बन जाएंगे। एक पोलन ग्रेन बनेगा, एक और पोलन ग्रेन बनेगा, पर पढ़ाने के लिए मैं अभी सिर्फ एक ही एक लूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर एक बनेगा हमारे पास, लेट्स से दिस इज अ माइक्रोस्पोर, दिस इज अ माइक्रोस्पोर स्टूडेंट्स। माइक्रोस्पोर क्या है हमारे पास, हैप्लॉइड बन के रखा है यहां पर माइक्रोस्पोर। Now students, this microspore, right, this microspore students will now undergo something called as the germination. It will undergo something called as maturation also, maturation, and also vacuole, vacuolation, vacuole formation. सो ये माइक्रोस्पोर बड़ा बन जाएगा, अभी बड़ा बन जाएगा स्टूडेंट्स, बड़ा बन जाएगा। यहां पर एक बड़ा सा वैक्यूल आ जाएगा, बड़ा सा वैक्यूल, और ये जो एक छोटा सा न्यूक्लियस था ना, यहां पर न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस यहां पर बन जाएगा। हमारे पास न्यूक्लियस भी आ गया यहां पर। देयर इज मैच्योरेशन एंड एज वेल एज वैक्यूल फॉर्मेशन। सो वी गेट द न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट्स, वी गेट द न्यूक्लियस, we get the nucleus, right student, nucleus. Now students, this nucleus undergoes now asymmetrical mitosis. Asymmetrical mitosis students. उसके बाद हमारे पास क्या बना, we get a large cell here. ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया हमारे पास। ये न्यूक्लियस एक सेल डिवाइड होके ना 2 सेल में बढ़ गया अभी, एक बड़ा सा सेल और एक छोटा सा सेल। दिस एंटायर सेल इज डिवाइडिंग नाउ, माइटोसिस। सो वी गेट 2 cells, we can end up getting 2 cells, we end up getting 2 cells, ठीक है। दिस राइट हियर इज कॉल्ड एज it is called as male gametophyte students, all of you. It is called as male gametophyte. This male gametophyte is also called as pollen grain. So एक माइक्रोस्पोर से ना आफ्टर मैच्योरेशन वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल बन गया। इस वैक्यूल से ये न्यूक्लियस अंडर दिस एंटायर सेल अंडरगोस एसिमेट्रिकल माइटोसिस एंड वी एंड अप गेटिंग द मेल गेमेटोफाइट और द पोलन ग्रेन। दोनों का मीनिंग सेम है। और यहां पर जो 2 सेल है ना हमारे पास, ये बड़ा सा सेल है, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल है ना, दिस इज कॉल्ड एज generative cell. We get the vegetative cell and generative cell at the end of pollen grain formation. Students, किस किस को समझ आया इतना पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? Let me teach you from starting. Microsporogen starting microsporogenous cells. Sporogenous cells हमारे पास है जो माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर है, यहां पर देखो इसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है हमारे पास स्पोरोजेनस सेल्स। ना स्टूडेंट्स, ये स्पोरोजेनस सेल्स से एक सेल बड़ा हो जाएगा,
स्टूडेंट, एक सेल बड़ा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ए माइक्रोस्पोर मदर सेल नाउ अंडरगोस मियोसिस 1, मियोसिस 1 स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 के बाद दो सेल बन गया हमारे पास, दो सेल, डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड बिकॉज ऑफ मियोसिस 1। नाउ उसके बाद मियोसिस 2, दो एक से सेल दो बन जाएगा, ए सेल दो बन जाएगा, एंड वी गेट द माइक्रोस्पोर। यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ऑलमोस्ट खेल खत्म है, ठीक है। वी गेट माइक्रोस्पोर टेट्राड। नाउ ए माइक्रोस्पोर टेट्राड से हम एक माइक्रोस्पोर उठाएंगे, हम एक माइक्रोस्पोर नाउ अंडरगोस मैच्योरेशन एंड वैक्यूल फॉर्मेशन, देन वी गेट लार्ज वैक्यूल एंड स्मॉल न्यूक्लियस हियर, नाउ इट अंडरगोस एसिमेट्रिकल माइटोसिस। उसके बाद हमारे पास मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन बन के निकल आ जाएगा स्टूडेंट्स, निकल आ जाएगा। एंड दिस मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन हैज टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल जो बड़ा वाला है और जेनरेटिव सेल वो स्मॉल छोटा वाला है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट्स बनते हैं हमारे पास। इस पोलन ग्रेन के अंदर जो दिख रहा है ना यहां पर, इस पोलन ग्रेन के अंदर जो ये जेनरेटिव सेल है ना हमारे पास, जेनरेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल आगे जाके दो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, पोलन ग्रेन गैमेट नहीं होता, पोलन ग्रेन गैमेट नहीं होता, पोलन ग्रेन इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, मेल गैमेटोफाइट। एक पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। जो ये जेनरेटिव सेल है ना, ये जेनरेटिव सेल आगे जाके दो गैमेट बनाएगा। स्टूडेंट्स इतना क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? डाउट्स जो डाउट स्टूडेंट्स, डाउट शाउट, डाउट, किसी को डाउट है यहां पर? सो पोलन ग्रेन कभी भी गैमेट नहीं होता स्टूडेंट्स, गैमेट नहीं होता, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज टू सेल स्टेज, दिस इज कॉल्ड टू सेल स्टेज, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टू सेल्ड स्टेज। और इसी तरह से ना 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन निकल के आता है बाहर, पोलन ग्रेन निकल के आता है 60% एंजियोस्पर्म, इसी तरह से टू सेल स्टेज पे निकल के आता है। I'll teach you स्टूडेंट, I'll teach you, don't worry। ये जेनरेटिव सेल है ना, ये जेनरेटिव सेल जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है ना, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, उस पोलन ट्यूब के अंदर ये जेनरेटिव सेल विल डिवाइड नाउ, इट विल डिवाइड। This vegetative cell will help in the tube formation. Vegetative cell will help in tube formation और generative cell divide होके ना दो गैमेट्स बनाएगा, और उसमें से एक गैमेट एक के साथ फ्यूज होगा, एक और गैमेट सेंट्रल सेल के फ्यूज होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। That will teach you next class. We'll go one by one. Okay. My students, pollen grain formation is done. My students, यहाँ पर दिख रहा है? This is the microspore. वैक्यूल फॉर्मेशन, न्यूक्लियस निकल आ गया, एसिमेट्रिकल माइटोसिस बन गया, उसके बाद पोलन ग्रेन बन गया, उसके बाद पोलन ग्रेन बन गया। यहां पर वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला, जेनरेटिव सेल छोटा वाला, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल हमारे पास छोटा वाला जेनरेटिव सेल है हमारे पास, यहां पर छोटा वाला जेनरेटिव सेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस ये देखो, ये है हमारे पास दो मेच्योर दहीसन एंथर। एक एंथर जब मेच्योर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, एक एंथर जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर, उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज करेगा, पोलन ग्रेन्स दिख रहा है, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज नाउ, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड बाय दिस एंथर। यहां पर जो मिडिल पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव ऑल स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, कनेक्टिव हियर। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आई विल टीच यू पोलन ग्रेन आल्सो टुडे, आई विल फिनिश पोलन ग्रेन कंप्लीटली। ये पूरा का पूरा मेल पार्ट है ना, फिनिश कर देते हैं आज ही, ठीक है, मेल का पार्ट फिनिश कर देते हैं स्टूडेंट्स। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। यहां पर पोलन ग्रेन्स दिखते हैं ऐसे, पोलन ग्रेन्स इस तरह से दिखते हैं, पोलन ग्रेन्स दिख रहा है। पोलन ग्रेन्स आर इन वैरायटी ऑफ शेप्स, शेप, साइज, कलर एंड डिजाइन, बहुत तरह के हमें पोलन ग्रेन्स मिलते हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स एक बात बताता हूं अभी, एवरी सिंगल पोलन ग्रेन हैज टू लेयर्स, दिख रहा है हमारे। लेट्स से दिस इज अ पोलन ग्रेन राइट नाउ, एक बड़ा सा सेल, एक छोटा सा सेल है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव सेल, दिस इज कॉल्ड एज योर जेनरेटिव सेल। इसके बाहर एक पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ ना देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड एज
ऑर्नामेंटेशन बनता है। नाउ दिस इज द आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्साइन। एक्साइन है, एक्साइन। जो अंदर का लेयर स्टूडेंट, अंदर का लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन। इंटाइन स्टूडेंट, इंटाइन। ओके, जो ये एक्साइन है ना स्टूडेंट्स, ये एक्साइन जो बना है बाहर का एक्साइन, बहुत बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। कोई भी एसिड डालो, कुछ भी करो, ये एक्साइन टूटेगा नहीं, बिकॉज दिस एक्साइन स्टूडेंट्स इट इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज sporopollenin. This exine is made up of what students? Exine is made up of sporopollenin. इस sporopollenin की वजह से ना ये exine is very resistant to acid. उसके ऊपर एसिड भी डालो ना, कुछ भी नहीं होगा उसको, इतना स्ट्रांग है ये। Okay, the hard outer layer of called exine, it is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known, one of the most strongest organic material in the world. Sporopollenin से बना हुआ है exine. Okay, intine, cellulose and pectin. Intine is made up of cellulose and pectin, students. Cellulose and pectin. Intine is made up of cellulose and pectin. Cellulose and pectin, students. Cellulose and pectin. Okay. Now, students. Now, students. इस पूरे के पूरे पोलन ग्रेन पे ना स्पोरोपोलिन हर जगह पे नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, मनोज तुम देख सकते हो, डायरेक्टली देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, डायरेक्टली लाइव देख सकते हो, चिंता मत करो। इस बाहर का लेयर है ना, बाहर का लेयर, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्साइन। इस एक्साइन के ऊपर ना देयर आर मल्टीपल गैप्स आल्सो। फ्रेंड्स, हर जगह पे एक्साइन नहीं होता, इस बाहर के लेयर पे देयर आर स्मॉल गैप्स, स्मॉल गैप्स। नाउ दीज गैप्स आर कॉल्ड एज germ pore. They are called as what? germ pore. germ pores हैं हम हर एक जगह पे। ओके, टुमारो क्लास नहीं है स्टूडेंट्स मेरी, टुमारो मेरी नीट पे 2 क्लास है, कल नीट पे 2 है, और हमारे कर्नाटका चैनल पे आई विल बी टीचिंग 12th बोर्ड के लिए एक क्लास है मेरी कल, और उसके बाद मेरी और एक 3 क्लास है कल रखी हुई है ऑलरेडी मेरी कंटिन्यूअसली, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज germ pore बना है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, germ pore बना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ पोलन ग्रेन, बाहर का लेयर इज एक्साइन, अंदर का लेयर इज इंटाइन। बाहर का लेयर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, अंदर का लेयर इज सेलोस एंड पेक्टिन। हर एक जगह पे एक्साइन नहीं है, यहां पर है germ pore के ऊपर एक्साइन नहीं होता है, यहां पर वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। स्टूडेंट्स याद रखो कि ये वेजिटेटिव सेल है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल, क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल है ना, इट विल हेल्प इन द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। और ये जेनरेटिव सेल है ना, जेनरेटिव सेल विल फ्लोट, यहां पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ना ये जेनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है, आराम से फ्लोट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस जेनरेटिव सेल आगे जाके गैमेट्स बनाएगा, और ये वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। दैट इज अ पोलन ग्रेन स्टूडेंट्स। ये देखो, पोलन ग्रेन एक्साइन इज prominent aperture called as germ pore, where sporopollen is absent. Exine can withstand high temperature and strong acidic acid alkaline. Inner wall is called as intine, made up of your continuous layer made up of cellulose and pectin. Intine. Okay. See, vegetative cell is also called as tube cell and generative cell. Vegetative cell is bigger. Vegetative cell is bigger and has abundant food reserve. So इस vegetative cell के पास बहुत सारा खाना होता है, खाना, okay? And large irregular shape nucleus, ये वाला irregular shape nucleus देख रहे हो, irregular shape nucleus ये वाला। And students, generative cell छोटा वाला, generative cell is a small and floats in the cytoplasm of vegetative cell, and spindle happens in dense cytoplasm. Okay, this is 2 cell stage, 2 cell stage स्टूडेंट्स। याद रखो, इस पोलन ग्रेन से ना एलर्जी भी हो सकती है, एलर्जी, बहुत ज्यादा एलर्जी हो सकती है, मेरे को भी होती है पोलन ग्रेन से। सो पोलन ग्रेन कैन कॉज डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आल्सो, इट कैन कॉज एलर्जीज, डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस हो सकता है इससे,
तो दूर रहना पड़ेगा इससे, दूर रहना पड़ेगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज पार्थिलियम स्टूडेंट, देखा है तुमने, देखा ये वाला पार्थिलियम स्टूडेंट्स, हे फीवर, बिकॉज हे फीवर आल्सो स्टूडेंट, देखा ये वाला। आईक्यूएम टीचर स्टूडेंट, आईक्यूएम टीचर मस्त है स्टूडेंट्स। पार्थिलियम देखा कभी, पार्थिलियम घर के पास, दिस कैन कॉज पोलन एलर्जी स्टूडेंट, इट कैन कॉज पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी करेगा पूरा ये, ठीक है, पोलन एलर्जी कर सकता है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। देन पोलन ग्रेन्स को खाते भी हैं एक्चुअली, पोलन ग्रेन्स के अंदर ना बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, सो पोलन ग्रेन्स को खा भी सकते हैं। दूसरे कंट्रीज में ना पोलन ग्रेन्स को खाते भी हैं, हाँ पोलन ग्रेन्स को खाते हैं, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। सो पोलन ग्रेन कैन बी प्रेजेंट एज बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, पोलन ग्रेन को स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक टुडे इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी। मतलब क्या है, हर एक पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद, एक पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कितने देर तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट्स right, pollen grains, the period for which pollen grains remain viable is highly variable to some extent depending upon the prevailing temperature and humidity. So viable it will change in some cereals मतलब जो खाते हैं ना, चौकोस नहीं वाला दूसरा स्टूडेंट्स, your different grains also, grains and cereals such as your rice, rice students, rice and wheat, pollen grain lose the viability 30 minutes, सिर्फ 30 मिनट में ना पोलन वायबिलिटी खत्म, 30 मिनट में ना पोलन वायबिलिटी खत्म हो जाएगा, 30 मिनट में, कहां पर, राइस और व्हीट के अंदर, ओके। एंड सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये तीनों की तीनों प्लांट फैमिलीज हैं, प्लांट फैमिलीज, इसके अंदर ना पोलन कैन बी रिमेन वायबल फॉर मंथ्स टुगेदर। सो इसके अंदर मंथ्स टुगेदर इट कैन बी वायबल, बट दूसरी जगह पे 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, okay students, before I go let me show you something students, before I go students, ये है हमारा डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स, आज खत्म हो गया स्टूडेंट्स। इफ यू गो हियर, तत्वा बुक, दिस इज द बुक विच यू विल बी रिक्वायर्ड फॉर NSEJS। NSEJS के लिए ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मिल रहा है भाई 599 को, ये प्रैक्टिस बुक है, इसके अंदर PYQs होंगे, इसके अंदर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, हर एक तरह का क्वेश्चन इस बुक के अंदर होगा, तत्वा बुक स्टूडेंट, तत्वा बुक, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ राइट, इफ यू गो हियर स्टूडेंट्स, इफ यू गो टू लाइव, हमने एक मस्त लाइव किया था सारे टीचर्स के साथ, तो दिख रहा है ये वाला लाइव, ठीक है। अगर इस पे नीचे जाओगे तुम, यहां पर देखोगे तो हमारी SHESS का बैच लॉन्च हो गया है, SHESS का, HEHSS का बैच लॉन्च हो गया स्टूडेंट्स, दिख रहा है यहां पर अभी भी प्राइस 10,000 है। अगर स्टूडेंट्स मुझे पता नहीं, अगर 20-50 स्टूडेंट्स ले लिया है, ऑफर चल रहा था इसका, पता नहीं ऑफर हो गया कि नहीं, पता नहीं, अगर ट्राई करो, ठीक है स्टूडेंट्स, बता रहा हूं, ये हमारा एग्जाम ना अभी तक बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, कंपटीशन कम है यहां पर, तो स्कॉलरशिप इजीली मिल सकता है यहां पर, ठीक है। सो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पता नहीं कहां से स्टार्ट करना है, पता नहीं क्या पढ़ना है इसके लिए, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू इन द एंटायर इंडिया बेस्ट कोर्स है हमारा, ठीक है, SCHSS का, ठीक है। तो इसका थोड़ा लेवल थोड़ा NSEJS से कम होता है, क्योंकि ये 10th तक है। सो जो भी बच्चे तुम हो ना, अभी ये एग्जाम लिखने के लिए कुछ भी फीस नहीं है, सो इसका एग्जामिनेशन सब लिखो। अगर आप NSEJS का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसको लिखना बनता ही है, ठीक है, दैट इज द एग्जाम है। सो यहां पर हमारा कोर्स हमारा 120 सेशंस बनेंगे यहां पर, और सबसे ज्यादा फोकस यहां पर मैथ्स पे होगा, मैथ्स पे फोकस होगा यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। वहां से हमारा खत्म आज का क्लास स्टूडेंट्स, आज का क्लास खत्म वहां पर हमारा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। अंटिल देन कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू।